पहला इंटरनेशनल चेक इन है, पता नहीं इमिग्रेशन में क्या पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स कम रहेंगे बोल के आई प्रिपेयर्ड सो मेनी डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, जिसका कोई काम नहीं आया। इमिग्रेशन में एक ही सवाल पूछा, अकेले जा रहे हो, उसके अलावा। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई टुक माई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलो ट्रिप, और ये जितना बोलने में आसान लगा एक्चुअली उतना आसान था नहीं। आफ्टर ट्रैवलिंग सोलो इन माई ओन कंट्री फॉर अराउंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग, ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट डिसीजन था, एंड आई नेवर एवर इमेजिन्ड Thailand was going to be my first international solo trip, but it turned out to be one of the best and one of the bravest decisions ever. So tag along with me to witness this roller coaster of a journey which was filled with a lot of nervousness, but it was one of the most fun trips of my life. Let's go. मिडिल क्लास लोग इंटरनेशनल चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ओवर हेल्प करते हैं, अरे ये डॉक्यूमेंट नहीं रुकना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, जल्दी चलते हैं, ज़्यादा चेक इन होगा, ज़्यादा चेकआउट होगा, बट काफ़ी डोमेस्टिक जैसे ही था। तो मेट्रो स्टेशन मेरे हॉस्टल के सीधे बाहर रुकती है, 10 मीटर के बाहर, तो वाई नॉट ट्रैवल फ्रॉम मेट्रो स्टेशन और वॉट एवर दिस SRT रेड लाइन मीन्स। सिम कार्ड भी नहीं लिया क्योंकि 700-800 बात के सिम कार्ड मिल रहे हैं, महंगा लग रहा है। एंड यहाँ पे एयरपोर्ट पे हमेशा फ्री वाईफाई होता है, प्रोटेक हर एक एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई होता है। अभी डायरेक्शंस देखे हैं। बैकपैकिंग टिप नंबर 3, बैंकॉक में मैंने खाओ सान सोशल नाम का हॉस्टल बुक किया था, विच वॉज राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी एंड अबाउट द वेरी फेमस खाओ सान रोड, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन। बाद इमीडिएटली मैं पहुंची 7-Eleven, जहाँ पे मैंने 500 बात का सिम कार्ड खरीदा और 200 बात बचा के मुझे काफी खुशी हुई। एंड देन आई मेट जूलिया फ्रॉम सीरिया एंड वी डिसाइडेड टू हैव अ वॉकिंग टूर इन बैंकॉक। You know how to prepare naan? Yes, of course. I'm working in a restaurant. And dal? Dal is amazing. I love the dal I eat. पहले दिन के एंथुजियाज्म में मुझे बैंकॉक सिटी काफी सुंदर लग रही थी, पूरी तरह से क्लीन रोड एंड ऑर्गेनाइज्ड रोड्स थे ना। And welcome to first day in Bangkok. एंड वी डिसाइडेड टू गो टू वाट फ्रा, जहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, काफ़ी बड़ा सा टेम्पल था, एंड आई वॉज डेफिनेटली mesmerized by such a huge Buddhist temple that I've ever seen in my life. To have some lunch. Egg meal. This is also an egg meal without Costed us just 30 baht, and thanks to Julia for showing me that. ketchup and whatever. Then it was time for us to hop on some coffee places, and because ये area काफ़ी touristy था तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी easily. We decided to go to Wat Pho, which has one of the Buddhist statue. यहाँ की entry fee आपको 200 बात होगी, which is approximately 500 rupees, and it was worth every penny क्योंकि ये कितना सुंदर था। I was definitely mesmerized by the architecture here, और कितनी बारीकी से ये टेम्पल डिज़ाइन किया गया था। क्योंकि दिन काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स देख रखी थी, so I decided to go to the very famous Platinum Mall, और यहाँ पे मैंने थोड़ी मोड़ी शॉपिंग किया, and I concluded my day 1 as I was really tired by the end of the evening. Day 2 started extremely early in the morning, and as everything was actually on a walkable distance from my hostel, I decided to explore Wat Arun. Inside me is dying because इतने सारे street food है और मैं कुछ भी नहीं खा पा रही। It's really nice to take a walking tour क्योंकि आपको यहाँ की डेली चीज़ों को how they do their daily things ये देखने मिलता है। I decided to walk around one of the most expensive areas of Bangkok, and I was so surprised to see such temples at every corner, and honestly I was awestruck. Thailand chai, cold tea, Thailand cold tea I guess, and you can get this 20 to 40 baht. It's very tasty. I mean also it keeps you hydrated. Also I think I'm addicted. I am actually at the most classiest and luxurious streets of Thailand. This is called a CM. You can fill in whatever क्योंकि काफ़ी सारे streets name change हो रहे हैं। हर जगह पूछने के बाद मुझे finally one of the best veg Thai curry खाने को मिली, and my day was already made, and I decided to go to one of the most famous temples in Bangkok, which is Wat Arun. 5 बात में क्या मिल सकता है? आप Wat Arun काफ़ी सारे लोग आपको स्कैम करने का ट्राई करेंगे, विच आई सॉ कि 99% इंडियंस वैसे ही जाते हैं। फ्लोटिंग मार्केट को लेके कम से कम 3,000 या 4,000 रुपये लेते हैं। But you can see Wat Arun in 5 baht, that is 10. And on the boat I met this super special people with disability who allowed me to tag along with them on the tour. Wat Arun, जिसकी entry fee 100 baht थी, was one of the most beautiful temples I'd ever visited, which helped me dive into the rich culture of Thailand. And after that I just sat in a small garden and witnessed the peace of the city with the
and it was already time to witness the nightlife of Bangkok, and I started my journey with the Chinatown. Chinatown is one of the most famous food street. यहाँ पे काफी ज़्यादा vlogs और videos YouTube पे बने हैं because of the reason of the diversity of food over here. You will definitely enjoy the street if you are a non-vegetarian, but if you are a vegetarian, here is what I ordered. Fried ice. I tried the fried ice cream, some veg pad thai, and the infamous coconut ice cream. It's just crowded always, and it has multiple types of cuisine that you can try. But वेजिटेरियन वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. बट मैंने कैसे करके पैड थाई ढूंढा. पैड थाई इज बेसिकली नूडल्स विद पीनट्स एंड श्रिम्प, बट आई रिक्वेस्टेड देम टू स्किप द श्रिम्प एंड आई एट इट lots and lots of beans, and it was really tasty. Apparently peanuts is quite famous here, so Jai Maharashtra for that. The ice cream is also really yummy. So I've had like 3 ice creams so far because I was feeling really left out. जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई खाने की जगह है और वो मुझे चिल्ला के कह रही यू डोंट बिलोंग हियर, तो वो मैंने काफ़ी दिल पे लिया. So that's there for nightlife in Bangkok. And just like that, we concluded our very infamous food tour, and it was time to actually explore the real nightlife of Bangkok. And as soon as I reached here, I saw my friends doing their own thing. एंड अगर आपको ऐसी नाइट लाइफ बैंकॉक में देखनी है तो यहाँ पे 2 टाइप के रोड्स है. एक खाओ सान रोड जहाँ पे हम अभी हैं, जहाँ से सारे टूरिस्ट स्पॉट्स काफी नजदीक है, और दूसरा है सुकुमवित एरिया विच इज टूवर्ड्स द सिटी. आई चोज खाओ सान रोड बिकॉज यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शंस भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं. एंड जैसे कि कहते हैं कि जिंदगी में हर एक चीज देखनी चाहिए, एक्सपीरियंस करनी चाहिए, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर ऐसी चीज शायद ही किसी कंट्री में देखने या एक्सपीरियंस करने मिलेगी. सो दिस वाज डेफिनेटली अ नाइट दैट आई विल नेवर फॉरगेट. And just like that, we ended our day 2 with a high note, and it was time for us to travel from Bangkok to Phuket the next day. And I decided to say goodbye to all my friends and have lunch. But I'm so shocked because the street is always full. I came on Friday night, so that's why, maybe because of that. But अभी एकदम सुनसान लग रहा है. There's like not even a single tourist that you can see. By this time I was feeling pretty confident and also sad to say goodbye to a city that started feeling familiar finally. But कहते हैं ना, जिंदगी का वही सफर होता है, and you have to say goodbye to it. I caught a bus from Bangkok to Phuket which costed 700 Thai baht. Phuket पहुंच के ना मैं एक बात समझ गई थी, ग्रैब और बोट एक्सेसिबिलिटी देख के कि साउथ गोवा जैसे जहाँ पे सारी जगह काफी दूर है. और ये था मेरा सबसे प्यारा सा हॉस्टल जहाँ पे ब्रेकफास्ट, बड़े रूम एंड ऑल्सो वॉशिंग मशीन. यहाँ पे एक्चुअली आपको जो चाहिए था वो सब था, और मुझे ये सिर्फ 350 बात में पड़ा. Hey guys, and a very good morning from Phuket. I just reached here in the morning. I took a bus from Bangkok. क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था फुकेट में, तो डे 1 में खा पी के शांति से एक आराम से बीच के आराम से बैठ गई. मैंने स्कूटी रेंट की अपने दोस्त के साथ विच कॉस्टेड मी 150 rupees per day, and I was just having the time of my life. I'm right now in that era where everything just feels like a dream. I just drove down 20-25 kilometers on a scooter. Which was मक्खन, रास्ते मक्खन थे, सब कुछ एकदम स्मूथ था. पूरा बैकड्रॉप यूरोपियन बैकड्रॉप जैसे था. मौसम काफ़ी प्यारा सा हो रखा है, ज़्यादा धूप नहीं है, अच्छी खासी हवा चल रखी है. पेट्रोल की टंकी पूरी तरह से फुल है, माइलेज काफ़ी अच्छा दे रही है. You're just having the time of your life. You're just wearing whatever you want. You're taking a dip in the ocean. You're just having some good food. How worried I was about this trip. और आपको और 2-3 चीज़ें दिखानी है. तो यहाँ पे जो सीट होती है हम कैसे चाबी से खोलते हैं, वो यहाँ बटन से खुलती है. तो मैं जब पेट्रोल पंप पे गई थी तो मुझे पता नहीं चला था कि कैसे खोलना चाहिए. It took me 5 minutes to figure out. फिर फाइनली कोई आके मेरी हेल्प किया. शाम को I decided to tag along with a friend's plan and go to Patong beach and just chill around a bit, जहाँ पे सब लोग वॉलीबॉल खेले थे, and I got included with them, and I was just relaxing and letting go of all the plans and watching the sunset and playing volleyball. और ये दिन भी बाकी दिनों की तरह काफी सुकून में बीता. So it's all festive vibes right now. I don't know the reason, but काफ़ी ज़्यादा badass feel हो रहा है कि मैंने खुद से स्कूटी चलाई, खुद को घुमाया, पार्टी की, चीज़ें एक्सप्लोर की, सब कुछ बैलेंस किया, और अब मैं जाके मैकडॉनल्ड्स खा के सोने वाली हूँ. और
क्योंकि डे 1 इतना सुकून में बीता, आई वाज ऑलरेडी वेरी pumped up for my day 2. Day 2 started extremely as I was planning to do a hike near Nui Beach, which was 25 kilometers from my hostel. And on my way, I crossed this elephant sanctuary where I came to know that these elephants, who are used as for tourist purposes, are extremely angry because they have to serve, they have to climb, taking these tourists climbing, and instead of using them, I offered them some of the bananas in 100. So a request from my end, when you travel to Thailand, you can do the same. होस्ट 22 जिसकी वजह से काफ़ी स्कैम से बची। तो ये जो हाइक हम आए हैं, यू कैन सी इट्स कॉल्ड एज ब्लैक रॉक व्यू पॉइंट, और यहाँ पे पार्किंग के लिए 100 रुपये ले रहे हैं। देयर इज अ नूई बीच ऑल्सो, अ वेरी हिडन जेम, बट आपको वो 100 बात नहीं देने हैं। डज दिस फील फैमिलियर टू यू? पीपल हु फॉलोड मी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस शुड फील फैमिलियर टू यू, क्योंकि हम दोबारा जंगल में हैं और अकेले हाइक करने आए हैं, जस्ट लाइक इन केरला, बट इस बार किसी और कंट्री में। वहाँ भी मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी लैंग्वेज के साथ, यहाँ भी मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है लैंग्वेज के साथ। आई कैन फ्लेक्स दिस पॉइंट कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे प्रॉपरली डायरेक्शंस दिए हैं। 300 मीटर की वॉक थी, बट 200-300 मीटर में भी पसीने छूट गए। एक्चुअली गूगल मैप्स भी ऑन है, तो मैं सही जा रही हूँ। काफ़ी ईजी है यहाँ पे चीज़ें। And it took me 20 minutes of walk to reach the top, and it was definitely really beautiful. ये बिल्कुल भी ऑफ बीट हाइक नहीं थी, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मैं हाफ वे से ही वापस उतर गई क्योंकि धूप काफ़ी हो रखी थी। And then it was time for us to head to our next destination, which was Big Buddha statue. यहाँ बैठ के मैं सोच रही थी थाईलैंड बेकार ही बदनाम है क्योंकि थाईलैंड के बुद्धिस्ट टेम्पल्स आर डेफिनेट एंड वेरी सूदिंग टू योर आईज एंड सो ब्यूटीफुल इन स्ट्रक्चर, जाके जैसे शांति से मिल जाती है। So yes, in Thailand you can see both sides of the world and at its best. And by evening it was time for me to explore Phuket Old Town, जो कि मेरे हॉस्टल से काफ़ी पास था। Hello guys and welcome to Old Phuket Town. This is by far one of my most favorite places in Bangkok/Phuket. यहाँ पे मैं कम से कम 4 से 5 बार कॉफ़ी पीने आई हूँ, बट रात में मुझे पता नहीं था कि दिन में इतना सुंदर लगता है। And the coffees that I've had here is one of the best coffees I've ever had. The place is very romantic for you to walk around and just sit, shop. यहाँ पे शॉपिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। 100 बात, 50 बात से 100 बात से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। The entire street has a very beautiful, French colony-ish vibe. More than that, maybe modern European vibe. And you'll find all kinds of people here of all kinds of culture who'll come here, just be around and roam around the town. I can't believe मेरा हॉस्टल इतने पास था and मैं हर रोज़ रात को आती थी, बट मैं कभी देख नहीं पाई इस स्ट्रीट की खासियत। And yeah, I mean, it's just so romantic. It hates. Currently, I'm hating to be single, क्योंकि this is by far one of the most romantic streets that I have ever walked on. एंड जस्ट व्हेन आई रीच्ड हॉस्टल और मैंने यही रोना, अपना सिंगल वाला रोना अपने फ्रेंड्स को बताया, दे वेंट ऑन अ मिशन टू गिव मी जस्टिस, और हम दोबारा उसी स्ट्रीट पहुंच गए मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने। So apparently I felt really single in the afternoon because I was on the street and the street was filled with couples. I have the clip, I'm going to insert the clip, but right now I have friends with me, so I'm not single. एंड स्मॉल टाइप फुकेट ओल्ड टाउन के पास ये गुरुद्वारा है, और अगर आपको घर की थोड़ी याद आए तो आप यहाँ जरूर जाना। एंड इट वाज ऑलरेडी डे 7 इन थाईलैंड, एंड हमारा वक्त आ गया था टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर, व्हिच वाज Phi Phi आइलैंड। Yes, we stayed on Phi Phi Island instead of 2, so stay tuned for part 2.